Good evening, everyone. Good evening, Jai Hind. So, how is everyone? How are all of you? I am good. I hope all of you are also doing well. देखो, I hope कि I have been able to answer most of the questions which are there with respect to the form. अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बट गलती मत करना, ठीक है? So I think you might have seen that we were having this one session. उसमें मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर जो डाउट्स हैं पूरा फॉर्म का एक एक पोर्शन बताया है, ठीक है? बट स्टिल बहुत सारे बच्चों के मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया हूं, ठीक है? हाँ, तो वी विल ट्राई टू गिव सम आंसर्स हियर ऑल्सो कि मदर का नाम आधार कार्ड में कुछ और है और आपके सर्टिफिकेट में कुछ और है. सी वन पोर्शन विच आई एम एड्रेसिंग हियर इटसेल्फ कि इन द केस ऑफ द नेम ऑफ फादर मदर, ठीक है, जो फादर नेम है या मदर नेम है, दैट विल बी एज पर योर 10th क्लास सर्टिफिकेट. जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होगा. तो दिस वन पार्ट इज देयर कि फादर एंड मदर नेम दैट विल बी एज पर द 10th क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है? नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शनल मैंने तो नहीं देखा है प्रिंस. ओबीसी सर्टिफिकेट इनकम बेस पे बनाए. देखो भाग्यश्री पटेल, जस्ट डू दिस वन थिंग कि आपका जो सर्टिफिकेट है जस्ट गेट इट वंस चेक्ड, ठीक है? पहला तो ये पार्ट कि इज इट अंडर द यूपीएससी परफॉर्मा और नॉट, पहला पार्ट ये. सेकंड पार्ट, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स इनकम और नॉट. और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है वो फैमिली फैमिली का जो इनकम है उसके बेसिस पे बनता है. तो यू हैव टू गेट इट करेक्टेड अकॉर्डिंगली. सर मेरे 10th मार्कशीट में सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक है. देखो, इफ यू हैव गेट इट करेक्टेड इन योर लेटर कार्ड्स, ठीक है, अगर आपने बाद में आधार कार्ड या बाकी में चेंज कराया है, बाकी मार्कशीट में चेंज कराया है, तो यू माइट हैव गॉट सम गैजेट नोटिफिकेशन फॉर दैट. अगर आपका चेंज हुआ है तो यू माइट हैव गॉट सम गैजेट नोटिफिकेशन फॉर दैट, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? वी हैव टू इन्फॉर्म कि हाँ पहले मेरा नाम ये था, अभी मेरा नाम ये है. 2024 के बेसिस पे बना है ओबीसी सर्टिफिकेट. लास्ट ईयर लग गया था, लास्ट ईयर आपने मेंस दिया था. देखो, लगने को तो आप अभी भी लगा सकते हो, बट उसके आगे जब आप प्रोसीड करोगे ना, व्हेन यू आर कमिंग टू लाइक लेट्स से, जैसे मान लो पहला अगर आपका सारा चीज रिक्वायरमेंट फिल नहीं होगा तो देन यू विल नॉट बी काउंटेड फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट. ये भी पार्ट है. क्लास डिवीजन में बीएससी क्यों फिल कर दिया? You have to fill first class or first grade. Is income certificate also needed for OBC? Income certificate doesn't have to be uploaded. Income certificate जो है उसके बेसिस पे आपका NCL का सर्टिफिकेट बनता है. The NCL certificate is made on the basis of the income certificate. 24 मई तक के लिए कैसे रूटीन बनाए, हाँ इस पे भी बात करेंगे. सारे सर्टिफिकेट क्लियर हैं? मैरिड हैं आप तो मैरिड हैं, फिर भी आपको सर्टिफिकेट तो फैमिली इनकम पे बनवाना पड़ेगा. मीन्स ऑन बेसिस ऑफ योर लाइक हस्बैंड वाइफ का दोनों का बनेगा ना, आपका अकेले का नहीं हो सकता. ऑन बेसिस ऑफ इनकम ऑफ बोथ तब आपको बनवाना पड़ेगा. ऑन बेसिस ऑफ इनकम ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो देन यू कैन गेट द बेनिफिट. Is there a problem if I have heard in photo but on exam day I did not? Heard in photo means हेयर है फोटो में. जस्ट रीफ्रेम योर आंसर वंस, श्रेयस पांडे. अगर हाँ बाल बियर्ड का, अच्छा इफ आई हैव बियर्ड इन फोटो, नहीं फिर बियर्ड आपको लेके जाना पड़ेगा. दिस टाइम इट विल बी फेस ऑथेंटिकेशन. तो बियर्ड तो आपको लेके जाना पड़ेगा. बहुत ज्यादा बियर्ड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बाबा बने हो आप.
नहीं है तो बस वैसा लेके आप जा सकते हो एग्जाम में। नहीं, इफ देर इज नो पैन ऑफ फादर यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन सिंपली मेंशन दैट फादर इज नॉट हैविंग पैन कार्ड, उसमें ऑप्शन है। हाँ, इंटरव्यू तक थोड़ा बहुत ट्रिम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ट्रिम नहीं कर सकते, यू कैन अरेंज इट, ठीक है। हालांकि इस साल यूपीएससी ने ऐसा कुछ खास वैसा नोटिफिकेशन दिया नहीं है अबाउट द फोटो, बिकॉज दिस टाइम इट इज सेइंग लाइव कैप्चर। तो जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसा आप अभी दिख रहे हो वैसा ही उस समय भी दिखोगे। नहीं, इफ यू डोंट हैव पैन कार्ड, इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली इफ यू हैव टू गेट सम सर्टिफिकेट, बाकी चीजें, तो देन इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। पूरी फैमिली का लगता है, फैमिली इनकम पे काउंट होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फैमिली इनकम पे काउंट होता है। इट इज काउंटेड ऑन बेसिस ऑफ फैमिली इनकम, जनरली पेरेंट्स के इनकम पे काउंट होता है। हाँ, वी आर कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर। नहीं, देर इज नो प्रॉब्लम एज सच शंकर, देर इज नो सच प्रॉब्लम। बियर्ड जैसे कि मेरे पास है वैसा, शंकर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जो आपका जो पोर्शन सर्टिफिकेट में है ना वो मेंशन करो, बाकी उनके आधार कार्ड में कुछ भी हो उससे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जस्ट मेंशन वट एवर इज गिवन इन योर मैट्रिक सर्टिफिकेट, नीलम शाक्या, जस्ट मेंशन केम नीलम इन द फॉर्म, और फिर उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि डू यू हैव चेंज योर नेम, तो चेंज किया है तो आप बोल सकते हो कि हाँ सिर्फ नीलम है, और उसमें आपसे पूछेगा इज देयर अ गैजेट नोटिफिकेशन, आप उसमें बोल सकते हो नो, और आधार कार्ड को सीधा अपलोड करने का जहां पे है वो तो आप कर ही लोगे। चलो, तो आज जो टॉपिक्स है हमारे पास, लेट्स कम, ठीक है। चलो गुड, मैं अभी बढ़ाऊंगा और चंद्रेश आई विल इंक्रीज इट मोर। तो लेट्स सी, आज जो टॉपिक से पहले उस पर बात कर लेते हैं। वन इज इलीगल माइनिंग, जिसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सोडियम आयन बैटरी, वी विल टॉक अबाउट जीसीसी नेशन एंड आईएसएस कमिंग ऑन अर्थ। तो ये चार टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आई एम टेकिंग एवरीवन्स डाउट, जस्ट वी हैड अ सेशन फॉर फॉर्म, तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे थे। नहीं, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चलेगा, तो दैट इज क्लियर, जस्ट आफ्टर 1 अप्रैल 2025। तो पहले कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर हैविंग इज द एम्ब्रियो डोनेशन इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया अंडर द लॉ। सेकेंड पार्ट इज सेइंग एम्ब्रियो कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर यूज इन फ्यूचर, तो विच ऑफ देम आर करेक्ट, तो कौन इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। बी ऑप्शन, हाँ, तो यू नो दैट दिस फर्स्ट पार्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, न्यू स्टार्ट ट्रीटी प्रोहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यू स्टार्ट ट्रीटी imposes a blanket ban on development of intercontinental ballistic missiles. So here we have question number 2 with respect to the New START treaty, that it prohibits development of nuclear weapons. Second is saying New START treaty imposes a blanket ban on development of intercontinental ballistic missiles. D option, blanket ban means complete ban. Blanket ban means complete ban. So you can be, see, it is not prohibiting. It simply says that
It is not prohibiting development of nuclear weapons. It says that there will not be deployment of more than 1550 nuclear weapons by US as well as Russia. It is about deployment of strategic nuclear warheads. It is not about development, it is about deployment. Deployment means जिसको हम पहले से तैनात करके रखते हैं. Okay. So this first part is incorrect. New START treaty imposes a blanket ban on development of intercontinental ballistic missile. नहीं, it is also limiting it to a certain number. It is limiting it to 800. कि सब कोई 800 से ऊपर नहीं हो सकता. ठीक है. So that is not a blanket ban. So hence here is answer is D. Israel is sharing borders with how many of the following nations? Jordan, Syria, Iran, Lebanon. Israel is sharing borders with how many of the following nations? Jordan, Syria, Iran, and Lebanon. C option. Not with Iran. You know that it is not with Iran. So the correct answer is option number C. That is only 3. Okay. So this is the 3 question. आज थोड़े EDG questions थे. Okay. Now we come to this one part. Okay. We are coming to this one part. There has been death of more than 18 people as of the news in the morning. It may be higher with the advancement. Okay. सॉरी पार्थ, आई फॉरगेट अबाउट इट. एक बार ना आप कमेंट में लिख देना ताकि बाद में मुझे याद रहे, मैं उसको सर्च कर पाऊं, देख पाऊं. ठीक है, तो जस्ट राइट इट वंस इन द कमेंट, लाइक लेटर कमेंट्स. हाँ, आई विल टॉक अबाउट दिस लाइक स्ट्रैटेजी. आज हमारे पास 3-4 टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएंगे. देन वी विल कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट ऑल्सो. ठीक है. Then here we have this one thing called as rat hole mining. Rat hole mining क्या है? Let's see this. This is basically, you can see that these small holes have been created. These small holes have been created. So this is one part. ठीक है. This is one part which we see here, that in Meghalaya there is a quite common thing, rat hole mining. So rat hole mining is in one such mining in which people are making a small holes. They're making a small holes. They are just undergoing it to bring the coal out from there. यहां से कोल को निकालने के लिए they are having this rat hole mining. This is something called as rat hole mining. Now, if we look at this, a blanket ban on this has been imposed on NGT since 2014. Means this is something which is banned. It is something which is banned. It is something which has been declared as illegal. So rat hole mining is a practice in which people are going underground. They are going underground and they are extracting the coals from there. They are trying to extract the coals from there. So that is something which we see as the rat hole mining. Now here what we see that this has been banned. But despite the ban, what we see that this continues on in Meghalaya. In various parts of Meghalaya, this is continuing. Now here we have certain parts of it. First of all, who will regulate this? First thing is, who regulate this? First part this, that who is regulating this rat hole mining? Who is regulating this rat hole mining? This rat hole mining is being regulated by the state government. This is not under the ambit of union government. Why? See, Meghalaya is a 6th schedule state. There is another part of it. Who is owning the resource? Who owns the coal here? Who is owning the coal here? That is again a major part.
First of all, what is rat hole practice? It is a type of mining which continues on in various parts of Meghalaya and even other states. This is a method in which there is the miners, they are making a small holes in the ground and they are trying to extract the coal from there. Now the part is why it is so much prevalent. You will find that this is something which is regulated by the state government and there is a huge pressure on the state government. Why? The pressure is because the state government is not having a ownership of this coal. The ownership of the coal belongs to the local people, the land holders. इंडिया में बाकी जगहों पे आप देखोगे कि जमीन के नीचे अगर कुछ निकला तो इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, बट इन केस ऑफ मेघालय इट इज अ 6th शेड्यूल स्टेट और यहां पे जो जमीन के नीचे है वो लैंड ऑनर का है, तो इट बिलोंग्स टू द लैंड ऑनर. दिस इज वन क्रूशियल पार्ट. दिस वन बिलोंग्स टू लैंड ऑनर. This one belongs to landowners. Okay. And there is a huge demand of this. Like यहाँ पे जो rat hole mining में जाते हैं, they are paid 3 to 4 times higher as compared to normal mining. जो normal mining में जाते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं. Those who are getting into rat hole mining, they are getting more and more money. They are getting more and more money. So why are they going for rat hole mining when they know that there are other methods? You can simply remove this entire portion. Okay. In mountains also the ownership has been given. It belongs to the land. जिसका भी लैंड पर अधिकार है उसका हर एक चीज पर अधिकार है जो उसके नीचे है. In this part of Meghalaya we see that there is the ownership of this entire resources with the landowners. Okay. It is a part of a 6th schedule state. The land also belongs to them. The minerals beneath it also belongs to them. Now there is one more part. Why it is highly prevalent in Meghalaya only. In other states there is lesser prevalence. In Jharkhand, in other parts there is lesser prevalence. Why? The coal quality is not very good. Coal is not found in abundance at one place. There are very thin areas of coal. There are very thin parts of coal which are found here and there. It is scattered. It is not a very good quality. बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है. It is not in a huge amount at one place. So open cast mining, where we are creating a bigger hole, is not very commercially feasible. तो commercially beneficial नहीं है. तो that's why people are going for rat hole mining using just like cheap labor. And then they're extracting the mines from there, they're selling it. So it is entirely their profit. So that is the rat hole mining concept in the case of Meghalaya. ये banned है. Supreme Court has also banned it, but still नहीं, all states में नहीं, कुछ Schedule 5 है, कुछ Schedule 6 है. So it is not applicable in all states. In Schedule 6 states and especially in Meghalaya, this has been allowed. Okay. So that is one part in case of Meghalaya, that we are having this rat hole mining and this is not under the control of government actually. Government can prohibit this practice, but that has to be done by the state government, not the union government. So that's why we see that in recent times there has been some cases from time to time where people have been trapped in these coal mines and many of them have become dead also. So that is one challenge in case of Meghalaya. Now, coming to the next part. Coming to this next part, there is one thing called as sodium-ion battery. There is another thing called as lithium-ion battery. So we are going to discuss about this one part also, that what is the sodium-ion battery and how they are different from lithium-ion battery. So can you tell me which one is better, sodium-ion battery or lithium-ion battery? Which one is better? We have two types here. One is sodium-ion and one is lithium-ion. So which one is a better source of energy, sodium-ion or lithium-ion?
Lithium ion is better. So divided by battery. Let's see. If we talk about both of them, this is having higher specific energy or higher energy density. We can say higher energy density. This is something which is having higher energy density. This one is having lower density. So on this account, this one is winning. Second part. Long life cycle. Like almost up to 3000 times or even more than that. Okay. Long life cycle, we can simply say long life cycle. Here we can see comparatively a smaller life cycle. When we compare lithium ion with sodium ion, we see that lithium ion has higher recyclability. Means it can be recycled, it can be used, it can be recharged multiple times as compared to sodium ion. So in these fronts, it is winning. But then what we see that this is scars. This is scars. Scars in India. Uneven distribution. Uneven distribution. Supply chain risk. Supply chain risk. Dependence on cobalt, nickel. So this is one thing where we see that there is a challenge. This is one thing where we see a challenge. But on the other side, what we see that this is something which is evenly distributed. It is something which is evenly distributed. Simple technology. This is something which is simple technology. This is something which is dependent on aluminium. Here in the case of lithium, we also see that there is a higher chances of explosion, or it can burst, it can be destroyed. Okay. So it is prone to explosion. But sodium ion batteries have very little chances of disruption or getting this like any such blast or any such explosion. So thermal risk higher. In this case, we see that higher thermal risk. Higher thermal risk. On this side, we see that there is lower thermal risk. Lower thermal risk. So now if you compare them, now you have different parameters of comparison. Now on this basis, if I ask you again, which one is better? What will be your answer now? Sir, I did universal registration on UPSC when I fill EPFO form. If you are having universal registration, you will not need to do it again. Both of them are recyclable. Chandresh, both of them are recyclable. Means you can use them multiple times. Both of them are recyclable battery. They are not exhaustive type of things. They are not creating any toxic waste. They can be easily recycled and used multiple times. They can be recycled multiple times. So if we compare them in terms of energy efficiency, in terms of recyclability, we see that
lithium is considered better. But in case of other parameters, we see that sodium performs better than lithium. So that's why this entire article is talking about this one thing, that why do we need to focus on this sodium ion battery? In case of India, if we are focusing on electric vehicles, if we are talking about electric vehicles or electric equipments, if we are looking at battery, so lithium is something which might not be that much suitable for India as compared to sodium ion battery. And in recent times, there is more and more refinement in sodium ion battery. Its capacity, the energy density is also increasing. So that is why it is being suggested that sodium ion battery may prove to be better alternative for India as compared to others. Okay. So that is sodium and lithium ion battery. Coming to the next part, okay, there is this Gulf Cooperation Council. We have got lithium reserves in Kashmir, Shreyas, but it is not yet commercially feasible or commercially exploited. What is the meaning of ion? Lithium ion is chemistry term when a metal or when any such element lose an electron or gain an electron, they get a charge over them. So that's why they are called as ions. So suppose if lithium is there, if lithium is losing electron, it becomes lithium plus. So then we call it as lithium ion. Same time, sodium also loses one electron, it also becomes positively charged. We call that as sodium ion. Okay. So it is about the charge on the substance. So that's why we call it as ions. Okay. So normally they are called as atoms, but when they become charged, then it is called as ions. So in the case of battery, in the case of lithium battery or sodium battery, both are working on same principle. That in the case of lithium battery also and sodium battery also, like the lithium ion is going towards the anode during the charging. Same time, sodium ion is going towards the anode during charging. And when it is discharging, then it comes from the anode to the cathode. Okay. Now, coming to this Gulf Cooperation Council. So this is a regional political and economic union which was established in 25 May 1981. Okay. This one organization focused on economic cooperation, investment and proposed common market, political coordination, diplomacy and shared security, defense and cultural and social initiative. मतलब कुल मिला के they are collaborating with each other in almost all the field, from defense to cultural to politics to economics. In all these sections, they are cooperating with each other. So this Gulf Cooperation Council, who are the members? Here we have members in form of Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain and Oman. As of now, there are 6 members. As of now, there are 6 members of this Gulf Cooperation Council. Here we have Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman, Bahrain and Qatar. So these are the 6 nations. Now the question is why we are discussing them. Why we are discussing all of a sudden about this council, Gulf Cooperation Council. These are basically West Asian countries. So why are we discussing about them? We are discussing about them just because of this. The terms of reference for India-GCC Free Trade Agreement has been signed on 5 Feb 2026. Means yesterday, there was a negotiation which had just started. अभी तक क्या हो रहा था कि we were making a free deal with UAE. अभी तक हम सिर्फ ये फोकस कर रहे थे कि we are having free deal with UAE, we are having free deal with Oman. But now we are having a comprehensive approach that instead of having a free trade agreement with one country, let us have the free trade agreement with the entire block. पूरे block के साथ ही free trade agreement करते हैं. The process has just started. We have not started doing free trade as of now. The deal has not been signed. We have just started the negotiation on this free trade agreement with the Gulf Cooperation Council. If we talk about the export or import, you can see our trade is something around $178.56 billion, out of which
Export is just 56.87 and import is this. Okay. So we see that we are having a trade deficit with this area. So we need to improve that. We need to focus on getting more and more export in this area. That's why we are trying to have a free trade agreement with Gulf Cooperation Council. Why we are having this deficit? If you look at that region also, look at the key export items. We are sending them engineering goods, rice, textile, machinery, gems and jewelries. What we are importing from them? We are importing crude oil, liquefied natural gas, petrochemicals, and precious metals like gold. So we are importing some of the very prominent items from there, especially the ones which are required for our energy security. Crude oil, LNG, precious metals. These are things which we are importing from them. But our export is quite limited. So we are not stopping just there with, like we are having the trade deal with Europe, we have got the trade deal with UK, but we are not stopping there. We are moving towards the Gulf Cooperation Council also. We are trying to have a free trade deal with this entire organization, GCC. So if we are having a good agreement with GCC, you will find that many of these countries are also party to Organization of Islamic Countries, OIC. So generally Pakistan is using OIC for targeting India, but many of the OIC members are also party to GCC. So if we are having a free trade agreement with GCC, we'll find that our relations with this Western world is going to improve further. So that is one part which we see here in Gulf Cooperation Council. Now, from Kashmir point of view, yes, of course. What is the problem with, like, none of the, see, the time had changed. Okay, the time had changed. The time had changed because now it's not like the West Asian countries are thinking that India has occupied Kashmir, it is an illegal occupation. Okay. So they are no longer thinking about Kashmir. That was one agenda which used to be there before 2010, 2005. India has started to cultivate the relations with West Asia from the last 25 years. From 2000 itself, India has started to cooperate with Gulf Cooperation countries. So now what we see that they are now focusing more on trade. अब उनको इससे मतलब नहीं कि जियोपॉलिटिक्स क्या चल रहा है, what is there in Kashmir, what is not there in Kashmir. So they will remain neutral on that. Okay, Shreyans, we will talk about that. So India has a different culture. Okay. India has a different culture. Then when we will have control on POK? How can I answer that? How can I answer that? Okay. Now, coming to this one thing, see, the ISS, International Space Station, is coming down. It is coming towards the Earth. This International Space Station, we have been reading about it for quite some time. So it has been decided that it is coming down. Basically, this is a habitable artificial satellite. This is present in low Earth orbit at roughly 370 to 460 kilometers. You will find that the key partners are Europe, US, Japan, Canada, and Russia. They are the key partners here. The speed of this ISS is around 28,000 kilometers per hour. It is completing one orbit in 90 minutes. Okay. So what we see that the International Space Station, this has been working for quite some time now. From 1998 to now we are here in 2026. Okay. So you can see that from 1998 to 2026, it has been a long time. It has been more than 28 years. So now what we see that it has become old.
it has become old, its efficiency is decreasing, it can no longer sustain human missions any longer. It cannot sustain human missions any longer. So it has been decided that by 2030 we are going to bring down this International Space Station. Okay, so what we see, NASA has announced last year itself that they are going to bring back the station in 2030. So this will break the International Space Station. It will be broken down into pieces. It will burn, and some part of it is going to fall in the ocean. There is a very prominent point in the ocean called as Point Nemo. So Point Nemo is in the middle of ocean in Pacific. तो वहीं पे ये fall down करेगा. No one is going to be hurt because there is no one who is living there. Okay. So you will find this one thing. It is going to fall near this Point Nemo. So now it has been decided that International Space Station, it will come down on Earth. कुछ पार्ट जो है वो जल जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और रिमेनिंग पोर्शन जो है it will come and land in the oceans. तो space debris will not be created. Why? Because it is going to fall down in the oceans. ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में नीचे गिराया जाएगा. So that is the aim which is going to be executed in 2030. So now it is formally retired. अब आप बोल सकते हो कि ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, it is retiring. Can you tell me any other space station? इस ISS के अलावा क्या कोई और स्पेस स्टेशन है? Is there any other space station apart from this International Space Station? Why destroy? इसे ऐसे ही रहने देने में क्या प्रॉब्लम है? See, now it has become old. It has become old. So it cannot survive. It would, if it is getting fragmented in the space, अगर स्पेस में टूटता है तो it will create many debris. Okay. इंडिया भी प्लान कर रहा है. yes, China is having its own space station. China is having its own space station, and when this one is going to come down, it will remain as the only space station. Okay. Tiangong space station of China. If we fill Mariana Trench with all garbage on Earth, then I don't know the answer for that, Adit, that whether it will fill it entirely or not. But yes, we do have a considerable amount of garbage on Earth. Okay. So it can fill a significant portion of the Mariana Trench, but I cannot comment on this part whether it will be fully filled or not. Okay. So Tiangong space station is there. Yes. So these were the topics which we have to see. अब देखो, there is this one question कि what should be your strategy for the exam in the upcoming days? What should be the strategy for the exam in upcoming days? That is one question. So what I would suggest you that for upcoming days, like there is two part. Okay, right now here I am talking just about the prelims portion. Dedicate around 6 hours, 6 to 7 hours per day for this prelims now. Okay, how much you have to dedicate? 4 hours will be for GS. Okay, 1 hour daily for the CSAT, 1 hour daily for your current affairs. Okay, 1 hour for current affairs revision. Okay, current affairs revision. So what you can see, 4 hours is for GS. In this 4 hours, try to solve at least 20 to 25 questions simultaneously. 20 से 25 क्वेश्चन को अभी कम से कम पूरे फरवरी महीने में 20 से 25 क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो. देन द सेकेंड पार्ट अबाउट द सीसेट. सीसेट के लिए आप एक टारगेट बनाओ. लाइक ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है वो क्या है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, सीसेट में मेनी पीपल्स आर हैविंग दिस कंफ्यूजन विथ रिस्पेक्ट टू मैथ पोर्शन एंड रीजनिंग पोर्शन. कई लोगों का ये प्रॉब्लम है. तो ट्राई टू फाइंड आउट कि देयर इज वन सेक्शन एवरेज, देयर इज वन सेक्शन टाइम एंड वर्क, पाइप एंड लाइक वॉल्यूम, ये सब का क्वेश्चन होता है. Then there is question on proportion, there is question on ratio, there is question on simple interest, compound interest, there is question on permutation combination. तो ये
पांच छह जो अलग अलग पार्ट है, जस्ट ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैट एंड डेली बेसिस पे एक को टारगेट करो. जस्ट ट्राई टू सॉल्व 10 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ दोज टॉपिक्स. और आप ऐसा एक सीरीज बनाओ कि लाइक सपोज दिस वीक लेट्स से वी आर हेयर ऑन 6th of Feb फ्राइडे, ठीक है. तो 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख से आप प्लान बनाओ कि चलो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 से 15 Feb में आपने टारगेट बनाया कि 9 to 15 Feb you are solving 7 different components of physics, sorry of maths. 7 अलग अलग टॉपिक लिए, हर से 20-20 क्वेश्चन लिया, सॉल्व किया. देन डू द सेम थिंग अगले वीक में रीजनिंग के वैसे ही टॉपिक लो, ट्राई टू सॉल्व देम अगेन. आफ्टर दैट रिपीट द फर्स्ट पार्ट. तो 7-8 अलग अलग थीम्स होंगे जो आपको मैथ में मिलेंगे, रीजनिंग में मिलेंगे. तो ट्राई टू मेक अ प्रॉपर लिस्ट कि कौन सा पार्ट है जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. ट्राई टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ इट. आप देखोगे कि बाय द एंड ऑफ मार्च यू विल हैव अ मास्टरी ओवर इट. जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सी सेट, आप क्या करते हो, एक लाइन से जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो. स्टार्ट सॉल्विंग सम मॉक टेस्ट, स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. और इसमें पार्ट क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपको रेशियो का मिला, वो नहीं बना. दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का मिला, वो बन गया. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इट in that approach, what I will say you that if you want that confidence, try to pick each and every part. आज के समय में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. यू कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम गूगल, फ्रॉम चैट जीपीटी और अदर्स, और फिर उनको एक एक पोर्शन को लेके कवर करना स्टार्ट करो. तो दैट विल बी वन स्ट्रेटजी विच यू कैन फॉलो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ सीसैट. हाँ, सस्पेंशन ऑफ एमपीज बाय द स्पीकर. देखो, स्पीकर जनरली सस्पेंड्स द एमपी. Why do they suspend the MPs? On what basis? On the basis of the rules of the house. जो हाउस के रूल्स हैं उसके आधार पे वो सस्पेंड करते हैं कि if they are violating the rules of businesses of the house, on that basis they can be suspended by the speaker of house for a definite period of time. It can be a few days, a few hours, or it can also be for the remainder of the session. उस सेशन के अंत तक के लिए उनको सस्पेंड कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए नहीं. अगले सेशन में वो वापस उसी हाउस में आएंगे. तो इट कैन बी डन बाय द स्पीकर ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन, ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस. स्पीकर विल डू दैट. देखो, आई विल सजेस्ट यू कि मैथ रीजनिंग को लेकर चलो अभिशंकर. मैथ रीजनिंग में चलो मैं स्पेसिफिक पोर्शंस भी अगले वीक में बता दूंगा. सर, मेंटरशिप टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज को टाइमली टेस्ट नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि दोनों एक ही साथ हो जाते हैं. कोई बात नहीं, जस्ट गो विथ वन शंकर. अगले को रखो, उसके क्वेश्चंस को रखो, आप आगे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. स्पेलिंग मिस्टेक्स इन आंसर राइटिंग, यू कैन इंप्रूव देम ग्रेजुअली. सर, ऑप्शनल और आंसर राइटिंग कंटिन्यू करें या लेफ्ट कर दें? अभी यू कैन फोकस एटलीस्ट 1 आवर पर डे ऑन ऑप्शनल. उस 1 आवर में एक दिन प्रैक्टिस कर लो, एक दिन पढ़ लो, एक दिन प्रैक्टिस कर लो, एक दिन पढ़ लो. Pre-syllabus is done, but not a single revision. Should I take up the exam if I start 15 Feb onwards? Also, no current affairs. Only CSAT is completed. देखो, Shreyash Pandey, what I will suggest you, if your syllabus is not done, it's my suggestion. If it is up to you, you can either accept it or you can continue with your own. देखो, क्रैश कोर्स कोई अगर चल रहा है ना तो यू कैन ज्वाइन दैट. लाइक केजीएस में भी चल रहा है क्रैश कोर्स, यू कैन ज्वाइन दैट. उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन फास्ट मैनर में होगा. यू कैन ऑल्सो डू द प्रैक्टिस. या फिर अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं तो ट्राई टू डू इट. सेकेंड थिंग, फॉर करेंट अफेयर्स ऑल्सो आई एम सेइंग दैट यू कैन रिलाई ऑन दैट क्रैश कोर्स. या फिर जस्ट अगर आप करेंट अफेयर्स वाला ही करना चाह रहे हो तो वी हैव डन दिस सब्जेक्ट वाइज करेंट अफेयर्स इन द अध्ययन बैच. उससे आपका तुरंत तैयार हो जाएगा. लाइक देयर आर अराउंड 400-500 टॉपिक्स जिसके मदद से आप तैयार कर सकते हो. हाँ, तो if syllabus is completed, then go with revision. Start the revision. It will help you. Go with test और mock papers along with revision. ऑप्शनल के लिए अभी भी 1 घंटे का टाइम दो. आई वॉज पार्ट ऑफ 2027 यूपीएससी बैच. आपसे नोट्स का सजेशन चाहिए था. व्हेन कैन आई शेयर द पिक? इफ यू आर कनेक्टेड टू मी एनीवेयर यू कैन शेयर इट. ठीक है, ट्राई टू शेयर इट बाय संडे और मंडे. आई विल हैव सम टाइम देन.
Magazine will help you in mains answer building. Anjali, Magazine is going to help you in mains answer building. It is KGS IS टेलीग्राम चैनल है, ठीक है. हाँ, you can message me there also. Thank you, sir. That was of imminent help. Can I opt for exam this year? You can decide that by the end of April or even mid of May. अच्छा ठीक है पार्थ, आई विल डू दैट. आई विल डू दैट. ठीक, बहुत समय हो जाता है बट आई विल डू दैट. कई बार नहीं ओपन कर पाता हूँ. ओके, तो दैट विल बी ऑल. नहीं, और भी अभी टाइम है अपने पास. आई स्टिल हैव गॉट 5 minutes. तो आस्क एनी क्वेश्चंस, आज हमारे पास टाइम है. ओके पार्थ. ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं चंद्रेश. ओके, चलो. देखो, हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड प्रेप, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. इफ यू वांट टू मैनेज बोथ ऑफ देम, यू हैव टू सैक्रिफाइस वन ऑफ देम. तो रियलिटी है कि फॉर यूपीएससी एग्जाम यू नीड अराउंड 7 to 8 hours. तो विथ कॉलेज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. सिर्फ आंसर चेक करने के लिए देखो ऋषभ, द प्रॉब्लम इज दैट कि आई एम हैविंग अराउंड 7 to 8 hours ऑफ क्लासेस प्लस 4-5 hours ऑफ प्रिपरेशन फॉर द क्लासेस, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर करंट अफेयर्स तो इतना टाइम लग जाता है. तो जनरली आई एम नॉट हैविंग एनी टाइम टू चेक इट, इसलिए मैं कमिट ही नहीं करता. नेटवर्क एक्सेस होता है कि नहीं, इट्स नॉट दैट. देयर इज कंप्लीट. I'm in final year, completed 75%. हाँ, तो that's good. If you are attempting for 2027, you can easily manage. If you are in final year, I think by the end of this June, you would have completed it, and you have already completed a significant portion of your syllabus. तो बस काफी है. केजे साइंस का 4th पिलर हूँ? नहीं नहीं, इतना भी नहीं हूं मैं. ईपीएफओ का फॉर्म भरा हुआ है तो क्या उससे भी मेंशन करना है? सिर्फ फॉर्म भरने को नहीं. इफ यू हैव गिवन द एग्जाम देन यू हैव टू मेंशन. सर मेरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा केजेस पर, मुझे इस बार का अटेम्प्ट भी देना है, मैनेज नहीं हो रहा है. देखो, यूपीएससी स्टडी 25. इफ यू थिंक कि यू आर एबल टू कंप्लीट योर एंटायर प्रिपरेशन बाय मिड अप्रैल और अप्रैल एंड, तब आप डिसाइड करना कि शुड यू बी गोइंग फॉर एग्जाम दिस ईयर और नॉट. ऐसे अटेम्प्ट वेस्ट मत करना, ठीक है. आप लिख के रखा करो क्वेश्चंस. आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट ऋषभ. वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून. अभी कुछ क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग, वी विल टॉक अबाउट आंसर राइटिंग ग्रेजुअली. थोड़ा सा टाइम दो, आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे. देखो, इफ यू हैव टू स्टार्ट योर रिवीजन ऑफ ऑप्शनल, start through the previous year question, go through the previous year question and try to solve it on daily basis. एक एक पोर्शन पढ़ो, एक एक पार्ट को देखो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ, yes, you can give Aditya, no problem in that. Thank you. But you have to work from your side. ठीक है, बिल्कुल ऋषभ, I will do that. I have crossed the limit of transaction up to 13 lakh. मतलब आप क्या चाहते हो, सीए वाला रिकमेंडेशन भी मैं ही दूं क्या? देखो, अब इतना स्पेसिफिक पार्ट मुझे कैसे मालूम होगा कि 13 लाख ट्रांजेक्शन पे फिर क्रीमी लेयर लगेगा कि नहीं. आई कैन टेल यू कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट कुछ चीजें हैं जो आपको फिर दूसरे सीए या किसी से पूछना पड़ेगा ना. आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट फाइनेंसेस. मैं अपना इनकम टैक्स खुद नहीं फिल करता, मैं और क्या बताऊं. नो सर, रिवीजन ऑफ फाउंडेशन स्टार्टिंग ऑफ ऑप्शनल. हाँ, तो रिवीजन फाउंडेशन का करना है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक सम थीम्स विच आर रेकरेंट इन नेचर. ठीक है, वी हैव गॉट सम थीम्स विच आर रेकरेंट इन नेचर, जो बार बार पूछे जाते हैं. जैसे कि सब फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, देयर आर एमएसएमई सेक्टर, देयर इज एग्रीकल्चर. तो ट्राई टू रिवाइज द portions of your foundation and current affairs in that manner.
ठीक है, चलो अब बाकी फिर अगले सेशन में देखेंगे, एंड अगले सेशन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताना। हाँ यस, आई कम डेली लाइव एट दिस टाइम एट 5 PM, 5 to 6। तो थैंक यू एवरीवन। और हाँ, फॉर्म से रिलेटेड और कोई क्वेरी रह गई हो तो जस्ट मेंशन इट वंस इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर दिस सेशन। जैसे सेशन एंड होगा ना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि बिफोर द सेशन आई कैन चेक एंड आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड